Good afternoon, sir. Good afternoon. अभी तक प्री बोर्ड्स कैसे हो रहे हैं? कैसे चल रहे हैं प्री बोर्ड्स? सर अच्छे चल रहे हैं। अच्छे चल रहे हैं। अभी बस एक बचा है ना? यस सर। कौन से सब्जेक्ट का है वो? हिंदी। हिंदी का। ओके। We'll just wait for 1 minute and then आज हम बोर्ड पेपर 2018 करेंगे, ठीक है? इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे बिफोर द प्री बोर्ड, तो हमने इसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि वी विल डू द एंटायर पेपर इन सीक्वेंस, ठीक है? सो दिस विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द असॉर्टमेंट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, क्योंकि जब हम चैप्टर में करते हैं तो हमें पहले से पता होता है किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, राइट? दैट मेक्स लाइफ इजियर। तो अभी हम पूरा एक पेपर करेंगे 2018 का, एंड we may not be able to obviously complete it in one class. It might take 2 classes, maybe 3 classes to complete this. Okay, but we have done some questions already, so it shouldn't be too difficult for us. Okay, so Yash, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. We will get started with the class. Okay, great. Yes, your video is still not coming. Now it's coming. Okay. Okay, let's get started. Okay. So if x is equal to 3 is one root of the quadratic equation given, then find the value of k. तो किस तरह करेंगे? सर इसमें x की वैल्यू 3 रख देंगे तो k की वैल्यू फाइंड आ जाएगी। Right, so we will put it as 3 square minus 2 into 3k minus 6 is equal to 0. This is our equation now. So 9 minus 6k minus 6 is equal to 0, which makes it 6k is equal to 3 and k is equal to half. Okay? Okay, let's do this. What is the HCF of the smallest prime number and the smallest? 18. Sorry? सर 18. देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट कौन सा होता है? 9. स्मॉलेस्ट कंपोजिट वो नंबर प्राइम नहीं है, 4 होता है। तो हमें क्या निकालना है? HCF of 2 and 4, which is equal to HCF of 2 and 4. We don't have to do any calculations. We should directly be able to say. Just a second. श्वेता, विशाल,
वर्षा अपना कैमरा ऑन कीजिए। अर्शिता। Yes, who is this? श्वेता। Can I call you back, sir? I'm speaking from NCR. I'm actually in a meeting currently. Yeah. I'm. No, I'll call you back and talk to you. Is that okay? Okay, thank you. श्वेता विशाल कैमरा ऑन कीजिए अपना। Unknown call. Okay. So the HCF is 2, right? We don't have to actually show any steps for that. That is straightforward too. Okay. Find the distance of point XY from origin. We did this question before the exam. What is that? So we can use the distance formula, right? We know what is origin. The coordinates of origin are 0, 0. 0, 0. So by using the distance formula, we will get x minus 0 square plus y minus 0 square. So the answer will be simply x square plus y square under root. Okay. Good. We can see. So distance is equal to this. As simple as that. Okay. If an AP is in an AP, if the common difference is -4 and the 7th term is 4, find the first term. सर इसमें हम a plus 6d करके d की वैल्यू डाल देंगे तो a निकल आएगा। ठीक है ना? तो the first term सर is A28 आ जाएगी। a plus 6 into -4 is equal to 4. Right? So we take it on this side. So we will have a is equal to 4 plus 6 into 4, which is 28. Okay. What is the value of, we did this question also before the exam. So we will use the complementary angles here, right? We can zero. तो वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले। Yeah, complementary angles is per se removed from the syllabus this time, but you know, this is a question in the board, so if you can do it, it's fine. I mean, it's not in the course this time, so it's okay, right? So this can be written as cos 0 आ जाएगा सर इसका। Okay, this can be written as what? Cos of cos 90 minus 23. 6. Right? Yes. Now that we will get as 67. So the answer will be 0. Okay. So we will see some questions which are this time out of syllabus. Okay. So we can either skip those if they are the entire section is out of it, we will just skip it. If they are very simple, we could do it for fun's sake. Okay. Given triangle ABC is similar to triangle PQR and there is the ratio of AB to PQ is 1:3. Then find the ratio of the areas. Now this is also out of 1/9. Okay, as such this is also out of your syllabus, but we know that the ratios will be in square. Okay, so one thing that you should always, obviously the answer is the square, so 1/9, right? But one thing you should check before writing this answer, right, is the most important thing is that the ratio is in this order only, right? Because that could be one trick in such a question. Be aware of that trick. Okay.
Given that root 2 is irrational, prove that 5 plus 3 root 2 is an irrational number. How do we do that? There is a standard method of. सर पहले 5 plus 3 under root 2 को रेशनल सर यहाँ पर हम 3 रूट 2 को रेशनल प्रूव कर देंगे और फिर कह देंगे, फिर लिख देंगे कि रेशनल और इरेशनल का सम जो होता है वो इरेशनली होता है। नहीं, वो हम नहीं करेंगे, वो तो गिवन है, रूट 2 इज इरेशनल इज गिवन, तो वो सम ऑफ रैशनल एंड सर इरेशनल। पहले अज्यूम कर लेंगे कि हाँ। 5 plus 3 under root 2 रेशनल है, फिर उसके बाद में दो को प्राइम नंबर, दो नंबर A is a rational number. ओके, तो हमने ये एज्यूम किया है कि ये रैशनल है. Then what do we do? Then usually the easier way is we want to eliminate this root 2 from here, right? yes. So what we can do is we can just take it on this side, right? So we can write that root 2 is equal to a minus 5 by 3. Okay. Now, what can we now argue? That this is rational. This is rational. This we can argue. Why? We can say that the right hand side is rational. Why? What is the reason? Let's give a valid reason for why this is rational. A minus 5 is rational, right? And why is a minus 5 rational? Difference of two rational numbers is rational. That is known. And then a minus 5 by 3 is rational. Why? Because division of two rational numbers is also rational. So we can say RHS is rational. Once we have said RHS is rational, we have a contradiction. Okay, this is a key word here, contradiction. That is our assumption is wrong. That A was rational is. So we are relying on the fact that if a number is not rational, then it is irrational. Okay, this is the assumption we are taking here. Okay, find the values of x and y in this. Okay, this is a very straightforward question. How do we do this? इसमें हम 40 into 30 is equal to x. हाँ, वो करने की जरूरत नहीं है आपको. That could be one path students may take. वो हमें करने की जरूरत नहीं है. प्रियांशी, रुद्र, अंशिका, अपना वीडियो ऑन करिए. रुद्र यूट्यूब. देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, राइट? So we get two equations. X plus y is equal to 30 is our first equation, and x minus y is equal to 14 is our second equation. We add the two equations, we get is 44, and x is equal to 52, and y is equal to 8. Okay, this is our answer. Okay. A straightforward question, just a 2-mark question, right? Find the sum of first 8 multiples of 3.
सर यहाँ पे AP बना देंगे। Very good. So this is the AP question. So first कैसे बनेगा? First is 3. First multiple of 3 is 3. Okay. So and second is 6. हाँ, तो ये हमें assumption लेना पड़ेगा कि इसने कहा है कि first 8 multiples of 3. तो हमारा ये हम natural numbers मान रहे हैं, ठीक है ना, वरना तो फर्स्ट पता ही नहीं हमें क्या है, राइट? हम नेचुरल नंबर्स मान रहे हैं, ये एक छोटा सा अजम्पशन है हमारा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में एज अ मैथमेटिशियन लेट्स से अजम्पशन इज वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स, ओके, वो एक छोटा सा अजम्पशन है। तो सबसे पहला हमारा मल्टीपल है 3, the next will be 6, 9 and so on, right? So a is equal to 3 and common difference is also 3, right? And he is asking us to find first 8, so we will use which formula? Can somebody tell me the formula? Answer equals to n. Sir, Sn is equal to n upon 2a plus 2a plus n minus 1d. Very good. Now we just put the values. 8, this is 4. सर इसमें हम वो वाला भी तो लगा सकते थे ना, n upon, बताइए कौन सा? 6. a प्लस एल वाला तो हमें लेकिन लास्ट नहीं पता ना, आप a प्लस एल वाला सोच रहे हैं ना? ये सर एल पता ही नहीं। हाँ, मतलब अगर आप ये सोच लेते हैं मन में कि a l हमें पता है, क्योंकि you know I can find l, the first one is 3, then the 8th one is 24th, right? Then you can do, but 24. है ना, no, the 8th one is this first, yeah, okay. Yeah, 20. Yes, you can do it that way, but I would suggest this is the straightforward way, right? So this is 2a, which is 6 plus this is 6. 108 n आ minus 1 जाए। is 7 into 3. 3. Okay. This is 24 into 27. Okay. Yes, sir. Find the ratio in which the given point divides the line segment joining 2 points, hence find m. ठीक है, तो पहले रेशियो ढूंढना है, फिर m ढूंढना है। सर रेशियो के रेशियो मान ले, के रेशियो 1 मान लेंगे। ठीक है, तो we will just take the point P here, okay, and let's take this as the ratio K is to 1. अंशिका एंड अजय अपना वीडियो ऑन कीजिए। तो रुद्र, संध्या, is equal to वीडियो ऑन। 2 into 1 plus 2 into 1 plus K into 6. And what will be this? 3 into 1 plus minus 3 into 12.
right? K plus. Now this is equal to 4 comma n. So we will first equate the abscissors to find k. Okay, so 2 plus 6k by k plus 1 equating x coordinate is equal to 4. 2 plus 6k is equal to, sorry, 4k plus, फिर 4 आएगा. right? So this is Sir, 2k is equal to, k is equal to 1, 1:1. right? So it divides it in the ratio 1:1. Okay, and what is the second part? Find m. So we put the value of 1 here, m will become 0, right? So answer okay. Two different dice are tossed together. Find the probability of getting a doublet. What is a doublet? तो जैसे head और tail. हाँ, Yes, तो sir. इसमें डाइस हैं तो So 2/4. 3, राइट? वो हैं. तो कितने डबलेट्स पॉसिबल हैं? 6. Sir, So 6. 30. 6, right? Yes, sir. और 36 total outcomes. Okay, so 36. probability of doublets is 6 by 36 is equal to 1 by 6. Okay, now what is the second one? Of getting a sum 10 of the numbers of the two dice. ठीक है, तो जो इवेंट है वो क्या है? वो इवेंट का सेट लिख लेते हैं. ओके, सो इवेंट ई है मान लीजिए, तो क्या है ये सेट? सर ये तो वो आएंगे ना जिनका सम 10 होगा, तो हाँ. 4 और 6 और 6 और 4. ठीक है, हाँ, तो 4 और 6 का सम 10 होता फिर है, 5 और 5. 6 और 4 का भी होता है, और 5 और 5 का भी होता है, 5 बट और वो 5. एक ही है, दैट इज ओनली वन, राइट? सो 3 है ऐसे, राइट? और टोटल पॉसिबिलिटीज अगेन is 36, so probability of this event is 3 by 36. 3 by 36. That is 1/12. राइट? सो ये हमारा आंसर हो गया. ओके, an integer is chosen at random between 1 and 100. Find the probability that it is divisible by 8. जैसे इसमें बिटवीन दिया है तो हम 1 और 100 को कंसीडर करेंगे या फिर नहीं करेंगे? करेंगे इस केस में हम. इस केस में it means from 1 to 100. सर गेटिंग 8 तो 12/100 होगा ना? सॉरी, सर डिविजिबल बाय 8 जो होंगे वो 12 होंगे ना, 1 to 100 तक. हाँ, कितने होंगे? सर 12 12/99. 12. है ना? सो 12 by 100. हाँ, तो 99 होगा या
तो देखिए इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। बिटवीन में द क्वेश्चन इज कि बिटवीन में 1 और 100 आएंगे या नहीं आएंगे। यूजुअली बिटवीन का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, राइट? Between, when we say the numbers between, the word between means excluding 1 and 2, 1 and 100. तो नॉर्मली जो ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें, लेकिन जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि between means exclude limits. Okay, from to, अगर ये लैंग्वेज है तो इंक्लूड लिमिट्स। ठीक है, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। ओके, सो लेट्स वर्क विद दिस अंडरस्टैंडिंग। तो इसका मतलब इसमें कौन से नंबर्स हो गए? 98 हो 2 गए ना सर to इसमें तो टोटल। 99 हो गए, यस तो 99 है ना? 2 to टोटल 9, नंबर तो 98 हुए ना। 2 to 99 का मतलब होता है 98 नंबर्स, राइट? अगर हमारे पास n to m नंबर्स हैं, सर तो हम यहाँ पर m को एक्सक्लूड करेंगे ना और n को गिनेंगे इसके साथ। नहीं अगर ऐसे लिखा हुआ है, नहीं यस सर ये जो ऐसे। लैंग्वेज होती है ना फ्रॉम, तो दोनों को इंक्लूड करेंगे। दोनों इंक्लूड होते हैं उसमें। ठीक है, बिटवीन में दोनों एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो अगर मैं फ्रॉम n to m लिख रहा हूं तो इसमें कितने नंबर्स होते हैं? m minus n plus 1, राइट? नंबर्स होते हैं इसमें, राइट? सो 99 minus 2 plus 1, okay, which is 98 numbers. हाँ बोलिए। तो मुझे एक्चुअली दूसरे नंबर से कनेक्ट करना है अच्छा हाँ कर लीजिए। इसमें, हाँ तो दूसरे आप नंबर लीव से, मत करो प्लीज। हाँ ठीक है, दूसरे से कर लो कनेक्ट। ओके, सो 98 नंबर्स हैं और 12 डिविजिबल है। तो हमारा आंसर क्या हो गया फर्स्ट का? 12/98। Okay, obviously we can simplify it a little bit. Okay, 40. Okay, so 6/40, and the second not divisible by 8. 86 upon सर 98। 1 minus 6 upon 49। ठीक है, so not divisible में we can just subtract this from 1. Okay, so the answer is, if this was PE, then we are finding PE complement, right? Which is 1 minus PE. So which is 1 minus 6/49. Okay. Find HCF and LCM of the two numbers and verify that their product is equal to the product of the given numbers. Okay, so this is a straightforward. सर इसमें हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हाँ वो तो पहले निकाल आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, यूज नहीं करनी, राइट? यस तो सर। यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि ये वेरीफाई करिए, हमें प्रूफ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है कि वैल्यूज निकालनी है, उनको मल्टीप्लाई करके देखना है और इनको मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है ना? तो इसका सबसे पहले HCF और LCM निकालना है, तो किसी भी मेथड से निकालिए, आपकी इच्छा है, राइट? सो लेट्स डू दैट।
Which method would you prefer? हमें दोनों चीजें निकालनी है, तो which is the better method to do? We can do the division method. कौन सा अच्छा मेथड है इसमें? प्राइम फैक्टराइजेशन वुड बी द इजीएस्ट मेथड, क्योंकि दोनों चीजें निकालनी है हमें, राइट? सो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 404 का। सबसे पहले 2 से करेंगे, 202, 2 से फिर किया 101, ओके, और 101 तो 101 से कर दूंगा। ठीक है। अब दूसरा करते हैं 96। हमेशा वी स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट टू मेक लाइफ इजियर, ओके। वी गेट right? So this is 2 raised to power 2 into 1, and this is 2. Okay, so HCF is equal to सबकी lowest power, 4 right? तो क्या है? 2 raised to the power 2. LCM क्या है? सबकी हाईएस्ट पावर ले ली, तो 2 raised to the power 5 into 3 into 1, right? So let's do that. This is 32. 6 is 9696. सर 9696 है क्या? 96, हाँ मेरा भी ये है। right? So ये हमारा LCM आ गया. Now we have to do the verification step. LCM into HCF. Right? And that multiplication we have to do here also. यस सर, इक्वली आ रहा है। हाँ, वो तो 100% आएगा, right? Okay, so it is it. And then we will also write it here and hence verified. Okay, in the end you can just say hence verified. Okay. Find all zeros. बहुत सारे वीडियोस ऑफ हो गए हैं, प्लीज डोंट डू दैट. कैन एवरीबॉडी? अजय का ऑन हो गया. श्वेता, रुद्र, यश, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. How will we do this? Find all zeros of the polynomial if 2 of its zeros are given. सर ये अल्फा और बीटा गिवन है, इससे वो बन जाएगा पॉलिनोमियल, फिर इसे डिवाइड कर देंगे तो जो फिर आएगा उसका क्वेश्चन फिर से. हाँ, तो फिर क्वोशिएंट को फैक्टराइज कर देंगे. हाँ, क्वोशिएंट निकाल के फिर उसके भी जीरोस निकालेंगे, ठीक है ना. तो सबसे पहले हमारे पास 2 जीरोस अवेलेबल हैं.
इन जीरो से हम क्या बना सकते हैं? अल्फा और बीटा मान लेंगे सर इन्हें। हाँ, अल्फा और बीटा सर इन्हें अल्फा और बीटा मान लेंगे दोनों। हाँ ठीक है, हम एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे इन दो जीरोस के साथ, राइट? तो व्हाट विल दैट क्वाड्रेटिक बी? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? माइनस दिस प्लस दिस, राइट? ये अल्फा है, ये बीटा है, तो दिस प्लस दिस, व्हाट विल दैट बी? 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना? एक्स x, then this into this plus this into this. So what is this into this? 4 minus 3, right, is equal to 0. सर 1 आएगा। Not sorry, there is no need for 0, right? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 are polynomial. Okay? x square minus 4x plus 1, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, है ना? और ये वाला जो था मान लीजिए px था जिससे हमने स्टार्ट किया। तो अब हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन कर लेंगे, राइट? So the first one is 2x square plus 3x square, right? What is the next one? Next term in the quotient? माइनस x Minus x. तो माइनस x Right? So we'll also bring the 3x down. तो माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 So we will get a minus 1. नेगेटिव 1 And it will end here. So this is our quotient, right? So this we have to now factorize. 2x square minus x minus 1 is equal to 0 को के zeros निकालने हैं. So how do we factorize this? We have to find two numbers जिनका product क्या हो? -2 हो और sum -1 हो. ऐसे numbers क्या? -2 और 1, right? So 2x square minus 2x plus x minus 1 is equal to 0. We get 2x plus x, sorry, x minus 1 plus 1 x minus 1. X is equal to 1 and minus 1. Okay. 1 और माइनस 1 ठीक है. So is this the answer? यस सर आप ये आंसर लिख के आएंगे तो आपको लगता है ठीक होगा आपके लिए? नो सर ये लिख देंगे ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2 plus under root 3 2 minus under root 3 1 very और 1 minus 1,2 ठीक है. वेरी गुड प्रशांत. देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्वेश्चन दोबारा